अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लाया है बेसिक डेफिनेशन से एक और। अगर आप हमारे चैनल को नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे वीडियो का एक ज़बरदस्त वीडियो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एक डेफिनेशन है, हम पढ़ते रहते हैं उर्दू में, पश्तो में, इंग्लिश में, एंड एनी लैंग्वेज। पैराग्राफ। What is paragraph and what is the definition of paragraph? So the definition of paragraph is that a group of related sentences about one topic, that is called paragraph. Understand? A group of related sentences about one topic, that is called paragraph. For example, if we pick up a paragraph, for example, on our last prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, like Prophet sallallahu was born in Makkah. His father name is Abdullah. His mother name is Amna. His grandfather name is Abdul Muttalib. So that is a topic. It's related. It's all sentence is related about one topic, which is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that is called paragraph. It's very easy. हमारा next definition है affix. What is the definition of affix? Affix, a syllable added at the beginning or at the end of word, that is called affix. So, a syllable added at the beginning or at the end of the word, that is called affix. Affix वो अल्फाज होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो वर्ड के पहले लगाए जाते हैं या उनके आखिर लगाए जाते हैं, इनको हम affix कहते हैं। जैसे unhappy is a affix. Like clear is a affix, also affix. So there are two types of affix. One is prefix. When a letter added to the beginning of word, that is called prefix. What? A letter added at the beginning of a word, that is called prefix. Like we have an example, happy. So the prefix of happy is unhappy, and prefix tell. The prefix of tell is retell. So that's so many example of prefix. So मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट में 3-4 प्रीफिक्स लिख दो। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास सफिक्स। व्हाट इज सफिक्स? दूसरा टाइप है एफिक्स का, सफिक्स। यहाँ पर डबल एफ है, आप लिख दो अपने कॉपी में। सफिक्स a letter added at the end of word, that is called suffix. Easily, suffix, a word added, a letter added at the end of a word, that is called suffix. It's very easy. एक हमारे था prefix and other is suffix.
सो प्रीफिक्स उसको कहते हैं जब हम एक लेटर को हम वर्ड से पहले लिखते हैं और उनसे ऐड करते हैं, इनको हम कहते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स हम उनको कहते हैं कि हम एक लेटर को उसके एंड पर उसके साथ प्लस करते हैं और एक लफ्ज़ बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास प्लेयर। अब हमारे पास प्ले है, अगर हम इसके साथ ER प्लस कर दे तो हमारे पास प्लेयर बनता है। इस तरह हम लिख सकते हैं प्लेयर। और क्या है, ड्राइव। अगर हम इसके साथ ER लिखते तो हमारे पास ये बनता है ड्राइवर। सो इस तरह बहुत से अल्फाज है, अगर हम इनके एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ हम इनको कुछ लेटर ऐड करते हैं तो उनके बाद उनसे एक अलग वर्ड बनता है। सो दैट इज कॉल्ड सफिक्स। सो इस तरह हमारे पास अदर डेफिनेशन है लिसनिंग। लिसनिंग, सो लिसनिंग का डेफिनेशन है, यानी उनका उर्दू में मीनिंग है सुनना, सुनने का। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिसनिंग? सो द act of hearing to understand someone, that is called listening। understand का लफ्ज़ पूरा देखो। so listening का definition क्या है? the act of hearing to understand someone, that is called listening। हमारे पास अदर डेफिनेशन है listening के बाद pronunciation। Look, pronunciation. If someone asks from you, tell me the definition of pronunciation. It's not important, but it is important in daily life. If someone asks from you what the definition of pronunciation, and you also ask from anyone what is the definition of pronunciation. So that's why we to do the definition of pronunciation. So let's start with pronunciation. Pronunciation is the correct way of reading of a word in a language, that is called pronunciation. That's very easy. So that's आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस तरह ही वीडियो आप लोगों के लिए डिलीवर करेंगे। हमारे चैनल का नाम है डियर खान सर। जो ही आप टाइप करेंगे आपको डियर खान सर शो होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के टॉपिक के बारे में हमको कमेंट करें कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। सो वस्सलाम।